पर्सपेक्टिव में खुशामदीद। इससे पहले जो भी मैंने किए वो मोनोलॉग्स टाइप के थे। पर्सपेक्टिव का जो एक आइडिया था, जिन साहब ने, जिस पर्सनैलिटी ने मुझे इनकरेज किया इसके लिए, आई एम वेरी हैप्पी। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको इंट्रोडक्शन थोड़ी देर में इनसे कराएंगे। A person who's not only an amazing professional, a banker, he's worked in government sector also, public sector also. Primary उनकी introduction banker के तौर पे ही है. For a lot of people, including myself, a mentor, a dear friend, and somebody, and for the masses, बहुत सारे लोगों के लिए the miracle man. So we have Mr. Zafar Masud with us today. Zafar bhai, thank you so much for being with us today. My pleasure. It's an honor. We've been thinking about this, and you are the one who actually gave me this idea and initiated that I should do something about this. So welcome again. आपसे इतनी सारी बातें हैं करने की, तो मैं ये चाहूँगा कि I will leave it to you. What is the first pressing thing that you would want to talk about? तो आजकल की इकोनॉमी के हालात हैं, तो you know, जिस चीज़ से हम गुजर रहे हैं आपसे ज़्यादा बेहतर कौन समझता है, with your experience and hands-on into this. So what would you like to talk about first, as we were discussing earlier? Irtiza, you are doing a brilliant job. I'm a big fan of perspective. And you know, the way you explain things to general public is the need of the hour. And I start out my comments today with the fact that, you know, इतना pessimism हमारे सोसाइटी में इस वक्त हुआ हुआ है, इतनी नेगेटिविटी हुई हुई है हमारे पास सोसाइटी में, that you know we need to be a bit more relaxed about it. Right. We need to be much more Cautiously optimistic. Cautiously optimistic, perhaps is the right word. Yes. We are not the only ones. The world is going through a transitionary phase. That's right. Both politically and economically. And we happen to be just got in the whirlwind. We just happen to be in the midst of You're right. this transition, where our own internal transition is also taking place. That's a double whammy. It's double whammy. And that's kind of complicated the matter even That's more. right. But these things happened, and you know, one has to be, as a nation, we need to be optimistic about it, that we will weather the storm, we will... This too shall get pass. over this too shall pass. That's And, right. you know, with this spirit, I would say that the government has been pulled off the standby agreement with the IMF. It's a big deal. Which reminds me, sorry to interject, आपने एक दो हफ्ते पहले जब ये great debate हो रही थी on a channel, you were perhaps the only one who said कि IMF के साथ हो जाएगा, and we were all surprised to see that. Why are you so confident about it? Why were you so confident? Yeah, Why? so you know, it's quite interesting. Actually, I didn't say that in so many words. Yeah. But because it was recorded piece and it wasn't a live. Gee, you were traveling at call, that time. Gee. So they kind of edited in a way that it gave the impression as if I said that it would happen. What I had said then was that, you look, I am quite optimistic that it would happen. And my optimism coming from the fact that there is a resolve on both the sides. Okay. IMF, as well as, you know, on the government of Pakistan side, that something happens before 30th of June. But there is also a resolution, there is also consensus that the next program is required. Because this program won't be enough. That's right. It's finishing on 30th of June. And that's exactly what happened in hindsight. You know, everybody realized that the new program is required, much more amount of money is required, not just that $1.1 billion which was supposed to come through in the after the 9th review. Even if the 9th and 10th were lumped together, it would have been 1.8 billion. So Pakistan needed much more, a larger amount of money. That's correct. To sail through the next 9 months that are important. And why those 9 months are important? Because, you know, in the clear sense of the word, default means that you cannot repay, or there is no provision exists to profile, restructure, or the principal and interest you can't pay. You have to pay that and meet your contractual obligation. That particular situation is arising in April 2024 when the bond falls due. Right. Hence that 9 month. Oh, And okay, that 9 okay. month.
ये आपने आज आर्टिकल भी आपका छपा है, That's right. बिलीव ट्रिब्यून में, एंड यू हैव Yeah, I मेंशन्ड just wanted to educate people. about that. People are using this very casually, the word of default. जी जी, restructuring. टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया और ये हो गया, अगेन टॉक अबाउट डूम एंड ग्लूम, so Yes. please You see, the fact of the matter is that, you know, this technical default, the definition varies from you and me and to the third party, to any third person. Um, you know, what you believe is a technical default, I may not believe it's a technical Right. default, or the third party may believe that it's a technical default. So it's in this kind of situation, it's always better that one would remain, you know, within the boundaries of the confined to- definition of IMF and the international lenders. Yeah, confined to what default really means. Right. And fact of the matter is, going strictly by the definition, until you call a default, oh yes, formally yes, yes. call a default, it's not a default, Oh, please. So for yes. God's sakes, people also understand other people's problems, and there is always leeway available. But for some odd reason, our people are just not willing to give the leeway to us, to themselves. And I think we are too harsh with us, to be honest with you. Yeah, yeah. I think political climate and that polarization also plays a role there at this point in time, because we are too close to the next elections and all that. Probably इस वजह से भी था. But Zafar भाई, एक important aspect, while we all talk about this default और technical default और कर गए हैं फलाना, अब बात हो रही है कि जी हम restructuring कर रहे हैं और reprofiling कर रहे हैं. आम आदमी के लिए ये चीज़ें भी समझना मुश्किल है. If you can just Yeah, very quickly. Quickly. You know, I mean, in the larger scheme of things, there are 3 or 4 terminologies which are being interchangeably used. So restructuring, reprofiling, rearrangement is the new word coined now. अच्छा. Rescheduling is another one. So broadly speaking, rescheduling and rearrangement is a broader term, which could mean restructuring, which could mean reprofiling. Okay. Now, what does restructuring and reprofiling mean? Restructuring means that, you know, it's in the pure sense of the word again, right after the definition, where there is the existing obligation has been restructured in a way, or the terms have been revised in such a way that there is a material alteration in those terms and conditions. Okay. So either the interest rates have been reduced and the tenor has been reduced, or combination of both, and there could be haircuts. Generally, when you talk about restructuring, haircut, explicit haircut is there. So Oh, really? if you have to owe $100, then you ask for a haircut of, let's say, $10. Which means write off हमारे ज़बान में जो. Write off is the other word. Okay. So haircut or write off जी. again is something interchangeably. कि प्रिंसिपल का इतना अमाउंट हम नहीं दे सकते, उसको आप माफ कर दीजिए, या डेफर कर, इंटरेस्ट को माफ कर, या इंटरेस्ट माफ कर दे. वो भी उसी जुमरे में. वेवर. हाँ. So in that sense, जो आपका रीस्ट्रक्चरिंग होती है, रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो उस सेंस में जहाँ ऑल्टर करते हैं आप मटेरियल टर्म्स, कमर्शियल टर्म्स को चेंज करते हैं. ओके. On the other hand, reprofiling is done when you essentially there is no material changes in the terms Okay. and conditions. You only stretch the tenor ओके ओके. in such a way that there could be implied haircut, which means that if the interest rate on that restructured debt is lower than the inflation rate, then it would be calculated as a Right. haircut Right. on the net present value basis. बट नॉमिनल वैल्यू में वो सेम होगा. वो was the same thing. ओके ओके. और इसमें अच्छा. इसमें जो एक और भाई सॉरी, इसमें to explain for our audience, how do you compare this with Sri Lanka? What happened there? Was that a मैं इसमें restructure? भी आता हूँ. एक चीज मैं और जरा एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर कि जो essentially हमारे पास 4 किस्म के डेट होते हैं, मतलब 3 किस्म के हैं, एक को आप 3A और 3B भी कह सकते हैं. So it's multilateral, it's bilateral, and then it's multilateral जब मैं कहता हूँ उसमें IMF भी आ जाता है, and then we have commercial debt. Okay. कमर्शियल डेट के अंदर 2 किस्म के डेट होते हैं, कमर्शियल बैंक से, और एक जो है वो है जो कमर्शियल पेपर है, जिस तरह यूरो बॉन्ड और सकूक है, जिसमें आपने सॉवरेन इंस्ट्रूमेंट्स जी. नाउ इन दैट सेंस जो आपका एक्सटर्नल डेट है, जो मल्टीलैटरल का एक्सटर्नल डेट है, वो रीफाइनेंस वो रीप्रोफाइल नहीं होता और ना वो रीस्ट्रक्चर होता है. उसको आपको
उसको वो रीफाइनेंस कर देते हैं. Essentially वो रीफाइनेंसिंग मीन्स sort of roll over जो करते हैं कि आपने रोल मुझे ओवर तो हो ही जाता है, हाँ बट वो अच्छा लॉन्गर refund पीरियड टाइम के लिए भी रोल ओवर कर सकते हैं. नहीं नहीं, वो रोल ओवर नहीं होता. वो एक्चुअली होता क्या है कि आपको वो पैसे आप उनको वापस करते हैं और और वो फिर वो आपको आपको वापस दोबारा पैसे पैसे दे देते हैं. अच्छा जिस तरह अभी हमने चाइनीज बैंक्स के केस में भी देखा. इसमें कोई डिफरेंशियल भी होता है आपने मुझे 1 अरब रुपए देने हैं लेकिन आगे की और ज़रूरत है या पे इंटरेस्ट का भी देना है तो आपको 1 अरब की जगह मैं 1.2 बिलियन दे दूंगा Right. और वो 1 बिलियन आप मुझे वापस कर देंगे तो आपको इनहेंस जो इंक्रीमेंटल होगा वो थोड़ा सा अमाउंट मिल जाएगा. ऐसे भी बिल्कुल हुआ होता है है. और अभी एग्जाम्पल्स में हमारा चाइनीज बैंक के साथ यही हुआ. यही हुआ है. तो वी नीड टू अप्रिशिएट कि मल्टीलैटरल्स में व्हाइल दे कांट डू रीस्ट्रक्चरिंग रीप्रोफाइलिंग बट दे Okay. कैन डू रीफाइनेंसिंग इन दिस सेंस कि उसका जो नेट इफेक्ट है वो वही आता है जो रीप्रोफाइलिंग का होता है. Bilaterals are open to all sorts of restructuring, but there is an increasing realization and requirement that there shouldn't be restructuring, there should be reprofiling. And then last one is the commercial side, where Eurobonds and the sukuks. commercial banks also either do the refinancing or reprofile. Most of the cases they do the financing because they have their own challenges of risk ratings and approvals internally. If they restructure, if they reprofile the account, any loan, then for them they have to downgrade it. They have to then take some kind of provision at their ends as well, and also at times they become they become constrained to give further support. अच्छा. So what they generally do is you pay back the money in 2 weeks time they'll return the money. Refinancing हो जाएगी आपका. अच्छा 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 बॉन्ड एंड सकूक नहीं होते. एंड उसके अंदर आप रीफाइनेंसिंग इस तरह कर सकते हैं कि आप नया बॉन्ड इशू कर दें. दैट्स राइट. इस वक्त जो हमारी कैपिटल मार्केट्स की ग्लोबल पोजीशन है उसके अंदर यूरो बॉन्ड करना गालिबन जरा थोड़ा सा चैलेंज है. इंटरेस्ट रेट्स है, कंट्री रेटिंग है, कैपेसिटी ऑफ लेंडर्स है, ये सब चीज़ें Globally, कम है. there is ग्लोबली a gloom मार्केट in the gloom. It's not just Pakistan, but any country to go to the capital market raise funding at this point in time may be a challenge. जोया भाई आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है बिकॉज अब इंटरनेशनली भी जो आपने शुरू में बताया था वी आर गोइंग थ्रू अ कमोडिटी सुपर साइकिल. इंटरेस्ट रेट सारी दुनिया में बढ़े हुए हैं. देयर इज़ stagflation in a lot of economies including ours. Europe is not doing that great. Internal consumption कम है. Post COVID work from home का तो the world is resetting. Yeah. Plus एक और आपने important चीज़ शुरू में बोली थी. Just want to add one thing अगर आपको याद होगा ये एक साइकिल होती है 10 साल की. मैं आपसे इस पर एक ज़िमनी सवाल भी करूँगा. आपको याद होगा 2013 में भी इंटरेस्ट रेट्स जो हमारे थे या उसके बाद कम आते रहे. आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रहे. यू वर ऑन द बोर्ड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. इंडिपेंडेंट बॉडी है वो सब करते थे. 2013 में भी $3 अरब से कम के हमारे रिजर्व्स थे. 3.25 पे थे जब हमने बाद में वो सुकूक किए थे. उस वक्त भी हुकूमत चेंज हो रही थी. नाउ 2023 सेम सिचुएशन. सो आई जस्ट ड्रू दैट पार्लेंस. उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेज़ी से कम आए थे जिससे बहुत ग्रोथ भी हुई थी और कम. जस्ट अ क्विक वर्ड ऑन दैट. हाउ डू यू because I know for a fact आप हमेशा you're not an advocate of high interest rate scenario. Why is that? और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके आर्टिकल्स में भी देखा है और अब हम बात करते रहते हैं आपका कहना ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इज़ नॉट द राइट टूल. इट इज़ द फिस्कल मेजर्स. सो दीज टू थिंग्स आई वुड लाइक टू हैव योर वर्ड. And to answer your earlier question also on the Sri Lanka, Zambia, Yes, Zimbabwe, yes, and that also. Zambia and Ghana, there is essentially reprofiling. There is an implied 40%ish, in some cases. For example, in case of Zambia, I think it's Haircut. 40%. Haircut is implied here. Okay. And this got done under the DSSI of the UN. So similar, the reprofiling is something which is acceptable globally. And another fact is that all the emerging markets, unfortunately, are in the market and asking for restructuring. Just to, as I put that in my article today as well, 38 countries have been identified as a potential risk for potential sovereign risk. Oh really? 38? By the World Bank. And in that situation we are not the only one. It's the globe which is
And this is perhaps also a reason why there has been a delay with IMF in talking further with our bilateral lenders, particularly China, which is almost 35%, including the Chinese banks, That's correct. of our external debt. That it is taking some more time, and थोड़ी सी agitation लोगों में आ रही थी कि जी क्यों नहीं हो रहा, जी क्या हो रहा है. जी To be fair, I think वो उनका मसला इस वक्त जो है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, उनके दरवाजे पे तकरीबन पूरा इमर्जिंग हाँ, मार्केट that's right. नॉक कर रहा है. And they have their own priorities also, हर एक की. पाकिस्तान is perhaps we need to realize कि हमारा अपना मसला जरूर होगा. So boss, most of these countries are Asia, Africa, Eastern Europe, 38 countries जो आप बता रहे हैं, यही इन्हीं रीजन में ज़्यादातर वो countries हैं. Coming back to my interest rate का. Interest rate का situation ये है ऐसा कि if you look at मैं अक्सर ये कहता हूँ कि we are a victim of our own narrative. So हमने हमेशा ये एडवोकेट किया है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हेडलाइन इन्फ्लेशन के साथ ट्रैक होनी चाहिए. फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ऑल्दो आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट Theoretically, in bookish. Coming back to my interest rate का. इंटरेस्ट रेट का सिचुएशन ये है ऐसा कि इफ यू लुक एट मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वी आर अ विक्टिम ऑफ आवर ओन नैरेटिव. सो हमने हमेशा ये एडवोकेट किया है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हेडलाइन इन्फ्लेशन के साथ ट्रैक होनी चाहिए. फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ऑल्दो आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट Theoretically, in bookish terms. हाँ it नहीं, might और work. वेस्ट में भी फॉर एग्जांपल जो हेडलाइन इन्फ्लेशन में नॉन फूड नॉन एनर्जी होता है वो तकरीबन 15% का कंपोनेंट होता है. तो देयर फॉर यू कैन स्टिल चेज दैट 15% का कंपोनेंट इन द इन्फ्लेशन केस. In our case, it's a very large portion, it's almost Right. a 50% portion Right. at this point in time, especially. And दुनिया में वो बहुत सारी जगहों पे, स्पेशली डेवलप्ड वर्ल्ड में, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज नहीं होता. हमारे केस में ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज की जाती हैं. Right. तो जब आप एडमिनिस्ट्रेटिवली एक चीज़ को मैनेज कर रहे हैं तो उसको आप मॉनेटरी पॉलिसी हैंडल करना आपके लिए शायद एडवाइजेबल नहीं है और पॉसिबल नहीं है. और ऑल्सो उन जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस होती है इनका कोर इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है. That's right. तो तकरीबन हमने एक एनालिसिस किया था इंटरनली जिसमें उसका इम्पैक्ट तकरीबन 30% आता है ऑन द कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन का आइदर वेज. तो अभी हमने देखा It's a very कि large आज जो नंबर portion. आया है वो तकरीबन कोई 30% के करीब आया है. इट्स डाउन फ्रॉम 37%, 38% टू Okay. 29.8%. और अकॉर्डिंगली जो आपका कोर इन्फ्लेशन है वो शायद मेरा ख्याल है 22.8% से कम होके 21.3 या 18.6 के करीब आ गया. वो 30% वहाँ आपको नजर आएगा दोनों तरफ मूव करता है. Okay. Okay. सो देयरफॉर इट इज बेटर फॉर अस टू टारगेट कोर इन्फ्लेशन. एंड बाय द वे वेस्ट में भी डेवलप्ड वर्ल्ड में भी वो दे ऑलवेज टारगेट द कोर इन्फ्लेशन. पीएससी डिफरेंट नामों से होता है. जी. पीएससी होता है अमेरिका में, इस तरह यूके में है. वो दे टारगेट कोर इन्फ्लेशन, दे डोंट टारगेट हेडलाइन इन्फ्लेशन. ऑल्दो देयर the administrative prices play a lesser role than It's a market economy. It's not like हमारे यहाँ control जो होती है. Yeah. so therefore my take has always been कि एक तो ये उसके साथ टैग होना चाहिए और दूसरा फैक्ट ये है कि देखिए हमें ये रियलाइज करना है कि आप एज ऑफ टुडे अगर मैं बात करता हूँ मार्च अप्रैल की तो तकरीबन 85% के करीब हमारी इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो हो गई है. इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर. जी. सो जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो फिलॉसफी है वो ये है कि आप डिमांड को किल करते हैं. हमारे केस में ये डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन ही नहीं है, हमारे केस में सप्लाई ड्रिवन है. हमारे इन्फ्लेशन की वजूहात जो हैं वो प्राइमरीली दो हैं. एक वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है जिस पे करेंसी डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आता है, कमोडिटी सुपर साइकिल का इम्पैक्ट आता है क्योंकि हमारे पास अपनी कोई 70-80% के करीब जो है वो हमारी एसेंशियल imports. एक तो वो फूड का और एनर्जी का वहाँ से प्रेशर Oil is the biggest, of course. And 30+%. palm oil, And edible oil. वो आता है. और फिर जो दूसरी तरफ और तकरीबन $10 अरब की आपकी जो है वो इम्पोर्ट्स हैं और फूड आइटम्स. That's right. और जो दूसरा आपके पास इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि जिसको हम नोट प्रिंटिंग भी कहते हैं, इफेक्टिवली इनडायरेक्टली
जो गवर्नमेंट बोरोइंग है वो सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंट होती है इन टर्म्स और कैटलिस्ट होती है फॉर क्रिएटिंग इन्फ्लेशन. ओके. So every time you increase the interest rate by 1 basis point, 100 basis point increase would translate into almost 400 billion rupee of Increase debt in- being created. अच्छा. हमारे पास तो रिसोर्सेज पूरे नहीं है, हमें तो बोरो करके वो देने पड़ते हैं. जी. तो यू क्रिएटिंग मोर इन्फ्लेशन. सो जिस तरह आप इंटरेस्ट रेट ऊपर रखते हैं वो और ज़्यादा इन्फ्लेशन, वो और ज़्यादा डेट क्रिएट करता है, और डेट क्रिएट करता है गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट या तो पेपर प्रिंट करती है, राइट. या और दिस इज वेरी इन्फ्लेशनरी नेचर. सो देयरफॉर माय आर्गुमेंट हैज ऑलवेज बीन दैट वी नीड टू फर्स्ट टैग इट टू द to the core inflation. And typically core inflation में और headline inflation में कभी ऐसा भी हुआ है कि headline inflation ऊपर core inflation ऊपर चला गया, headline नीचे चली गई, again वो administrative prices की वजह से. But by and large अगर मैं 10 साल की trajectory लेता हूँ तो there has been a substantial difference between the And the correlation is there. there is a clear cut correlation. Yeah. But that's, we're talking about, almost saving of something close to, 500 billion to a trillion rupee if we just change this phenomena in our equation. Plus the government piece itself, जो डेट क्रिएट होता है, आपका डेट जनरेट होता है, उससे और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है. सो अगर हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है फॉर द पर्पसेस ऑफ taming the inflation, it's perhaps not the right tool unless we'll be able to de-escalate the credit. That's right. That's The right. leverage. By the way, another phenomena that has happened over the last 1 decade globally is that the leverage ratios have gone up substantially high. Not just in our case, but globally. US just went through that. उनकी सीलिंग बर्स्ट हो गई थी. ज़फर भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है कि अगर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से दो नेगेटिव्स होते हैं. यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ अ बैंक, यू वुड सी यू वोंट बी inclined to give that credit to the market जब आपको गवर्नमेंट में एक बेहतर रिटर्न मिल रहा है. वन, तो एक क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है टू द मार्केट. उससे फिर जब आपके पास बिजनेसेस के लिए कैश फ्लो प्रॉब्लम होती है तो उससे फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर होता है. तो दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग द इकोनॉमी. व्हाट यू आर सेइंग इज कि इट इज डिमांड कॉन्ट्रैक्शन, बट आवर प्रॉब्लम इज नॉट डिमांड, इज द सप्लाई साइड फ्रॉम द अदर एंड. सो इट्स just to share some numbers on the demand side with you. yeah. So that leaves behind, if I were to take the investment to deposit ratio, that leaves essentially behind, 15%ish of private sector credit. Private sector credit में इत्तेफाक से हम public sector debt को भी public sector entities को भी शामिल करते हैं. अगर हम वो निकालते हैं और concessionary financing निकालते हैं, तो we are talking about around 9% That's leaving behind for the private sector. Yeah. And interestingly enough, private sector के अंदर भी जो रियल डिमांड मैनेजमेंट होती है ग्लोबली, इट्स द मॉर्गेजेस एंड द पर्सनल borrowings, the consumer side, that constitutes the largest number in the private sector credit. In our case, it's the other way around. In our case, the total consumer mortgage lending तो 1% से भी कम है. Total 1% of the total private sector. जी, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का. And जो आपका जो कंज्यूमर लेंडिंग है, that is 3% of the total private sector. Mortgage is lesser than of course. Including that. तो वो 1 है, ये 3 है. ये 3 है. तो आप उसकी खातिर क्या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए जा रहे हैं? We need to be a bit, rational. So same by the same parlance, fiscal measures ज़्यादा बेहतर है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो कि कोशिश कर रहे हैं अभी 9.2 ट्रिलियन से 9.8 किया है IMF कहने पे. Without a doubt. ना. Okay, so यहाँ पर भी एक और डिबेट चल रही है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है. I think I take the advantage of the presence of talking to you today here. I'm in the process of writing something on these lines as well. So अगर हम अपना fiscal side देखते हैं, तो fiscal side पे while there may be perhaps an opportunity to increase more tax. जी. To broadening the tax base. The larger problem is managing our expenditures. And expenditure में ना there is a lot of, मैं
मैं बहुत ज़्यादा frankly थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ विद दिस पॉपुलिस्ट बातें हर वक्त कि जी एक्सपेंस काट दो और फलाना कर दो और डिफेंस बजट इतना और फलाना डिफेंस. हाँ, दिन में 4 की जगह 2 दफ़ा चाय पिए हैं तो टी बैग का खर्चा They're not- बचेगा तो these मुल्क are, तरक्की we करेगा. need This to is put things in trivial. context. जी. And the fact of the matter is that the largest culprit on the expenditure side is debt. That's right. And the debt servicing number in the budget is 7.3 trillion. It's 7.3. 7.4 trillion. That's I would right. say, 3 That's something right. है. Yeah. तो 7.4 trillion के आसपास आ रहा है. This about 55-56% of the whole 14.46 का. That's right. It's Almost 50%. It's almost 50%. And by the way, just to, you know, just to let you know that, you know, if you do the adjustment of the provinces from the revenue side, then the revenues are 6.9 billion. जी, that's right. वो 5 They don't ट्रिलियन even निकाल cover के that इसमें से. जी हाँ. 7.4. जी हाँ. So therefore, 7.4 is that, and then you have SOEs, and then you have, you know, circular debt, which is another 2.5 to 3 trillion. जी. If I were to, you know, put the two together, we're talking about, you know, almost 10 trillion here. And then on top of that, we have pension. Pension, put the provinces together, is 1.6 trillion. But for the time being, if I take that number out, and just जी, consign फेडरल it to का the- भी close to a trillion. Yeah. close to a trillion. year. So we are talking about 11 trillion of expenses. In the overall scheme of things, the government's running total expenses are 650 billion rupees. That's correct. I mean, it's neither here nor there. And sorry, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स की बड़ी बातें करते हैं. 1.8 वो भी 1.8 11-12% को इतना बड़ा वो मुसीबत नहीं है. 11-12 of the total budget. Of the total budget. And the GDP का, because वहाँ ज़्यादा जो relevant comparison Impact है है. वो 2% है. That's correct. So 2% of GDP, and we are making so much hoo-ha about it. For God's sake, focus on the right thing. So when you talk about, you know, managing your expenditure side, if you manage your monetary policy right, i.e., interest it back to core inflation, then on a 10-year trajectory, you have a differential of 2.52% between headline inflation and core inflation. Okay. If I were to put this number together, we are talking about a saving of 1 trillion rupees for the government. So if we follow this principle alone, we'll be able to save substantial amount of money there. In our ये तो इतने पैसे होंगे जितना आपने पीएसडीपी के लिए 950 पे रखे तो पूरा एक 950 खरब और उसके ऊपर 150 और मिला के वो जी वो 250 है 250 वाले। मिला के जी बिल्कुल वो है, 1.1 बनता है जी जी PPP वाला. दैट्स राइट. So that is another. तो उसमें ये ऐड हो सकता है या वो क्वेश्चन बिकॉज जब बजट में डेफिसिट होता है या आपके पास टैक्स कम होगा सबसे पहले पीएसडीपी कटता है Right. तो विल बी एबल टू So रिफंड. that's one, and then currency management is another one. Currency management के अंदर we have to be a bit realistic and moderate about it. We don't have to go to any either of the extremes. We still have to manage the currency, but within a band. So a band should be, whether we like it or not, there are, there is a debate. It's a moot point whether RER is the right gauge or not. जी It isn't. It's the gauge which is universally accepted. For the time being, let's stick to this. What I'm saying is that our currency management should be in such a way that it should be 95 to let's say 105% band of RER. If you go beyond 105%, that's a problem. If you go less than 95%, it's a problem. Because if you go, what does RER mean? व्हाट डज इट Real रिफ्लेक्ट effective एक्चुअली होता exchange क्या है rate. रियल इफेक्टिव It's the एक्सचेंज रेट. it determines the competitiveness of the two countries which are into a trade business. राइट. So essentially, what's happening is that when you a country which is running a current account deficit, if you run if your currency is less than 95%, let's say 85%, then you are actually creating more inflation in the economy. So you will always stay behind that country which is long on By that person. Okay. long on their current account as comparison to the other which is short on current Which account is like has a ourselves. deficit. Therefore, it is important that we manage our currency. And there are numerous examples like this that until they achieve that exportable surplus or the equation kind of balanced out,
they manage their currency. China is a classic example of that. सो भाई इस पे मुझे याद आया मैंने एक आपका ये आउट ऑफ द बॉक्स के अंदर एंड बाय द वे दिस इज ब्रिलियंट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द थर्ड एडिशन ये जो आपने कंपाइल किया अपने आर्टिकल्स आपने एक जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इक्विलिब्रियम का जिक्र किया है और आपने ये भी बोला है कि रनिंग अ डेफिसिट इज नॉट बैड एक्चुअली एट टाइम्स डिपेंडिंग कि वो आपको क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है इधर कितना कि आपको हर बार डिवैल्यू करने की जरूरत नहीं है जस्ट टू रेज एक्सपोर्ट्स बिकॉज उससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बनता है और आपने 10 साल का एक एवरेज भी उसमें दिया था देवर अ फ्यू ग्राफ्स सो यू एंड दिस इज 3 years ago you have been saying that and advocating That's that 2018. 2018 that's 5 years ago so trade deficit बुरी चीज़ नहीं है एज सच डिपेंडिंग कि आप क्या बना रहे हैं बट द वैल्यू ऑफ द इंक्रीमेंटल वैल्यू एडिशन दैट दे आर डूइंग दैट इज़ व्हाट रियली मेक्स द डिफरेंस जिसकी वजह से आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही हो या कुछ आई थिंक दैट्स द कोड Running trade deficit for फॉर अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री in economics there are no conclusive दैट्स राइट this thing. These are always trade-offs. So when I say this in my article that current account deficit, running current account deficit is not a bad बिकॉज सरप्लस thing इज at times. इनएफिशिएंट अदरवाइज आपने वहाँ पे जिक्र किया है एक तो वो inefficient हो जाता है जी दूसरा ये कि current account deficit as long as it is within the manageable limits it's actually not a bad idea because at times trade-offs are such in the country that it's It necessitates better off that. not going for a surplus. So, thank you so much. This was very in-depth, and sometimes I feel you're more of an economist than a banker. I mean, that seems like your passion. और ये ज़्यादा उस वक्त हुआ जब आप स्टेट बैंक में थे. I think ये एक थी, and you have that thing. एक ज़माने में एक पोजीशन के लिए बात हो रही थी. तो उसमें यही था कि बैंकर वर्सेस एन इकोनॉमिस्ट में किसी को बोला भाई वो वैसे तो बैंकर है बट बाय हार्ट ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट बिकॉज एक पैशन नज़र आता है आपका इस चीज़ के ऊपर. सो व्हाइल वी आर ऑन द सब्जेक्ट ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है मैंने एक उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था एंड आई नो योर व्यूज़ ऑन दैट ऑल्सो एंड यू क्लोजली वर्क विद द लाइक्स ऑफ PIAs एंड पाकिस्तान स्टील ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है इस PIA के साथ तो मैंने क्लोजली काम नहीं किया वो तो उन्होंने मेरे साथ बहुत क्लोजली आपने बिल्कुल किया है ये काम और किया। इससे पहले भी आज से काम बहुत दिखाया है बिल्कुल काम दिखाया है बट आपने भी शुरू में काम दिखाया था इन योर प्रीवियस लाइफ जब आप एक फॉरेन बैंक के लिए काम कर रहे थे आपने 777 के ऊपर काम किया था सो यू हैव सीन बोथ द साइड्स एंड PIA हैज बीन योर ओल्ड कस्टमर बट कमिंग बैक अपार्ट फ्रॉम द पीपल एंड अगेन मैं ये कहता हूँ ग्लोरियस पास्ट उन्होंने बहुत अच्छा किया था दैट इज़ वन एग्जाम्पल अपार्ट फ्रॉम दैट एंड वाइल वी आर इन द सब्जेक्ट आप आजकल चेयरमैन भी हैं नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ OGDCL हमारे पास एंटिटीज़ OGDCL जैसी भी हैं जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं एंड परहैप्स द लार्जेस्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड डिविडेंड प्रॉफिट एंड व्हाट नॉट मोस्टली जो हैं जो कि कॉरपोरेशन ऐसा लिस्टेड भी नहीं है जो रेलवे है बहुत सारी है ये ड्रैग है स्टील मिल फॉर एग्जांपल स्टील मिल को चलाने से उतना ज़्यादा नुकसान होगा कि इसको बंद करके लोगों को तनख्वाह दे दें बट वो भी तो कहीं ना कहीं से जारी होगी कनेक्टिंग दैट विद योर प्रीवियस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है इज प्राइवेटाइजेशन द ओनली सोल्यूशन और वेल फॉर नाउ एंड ऑन दैट व्हाइल वी आर ऑन द सब्जेक्ट व्हाई डज एनी गवर्नमेंट कमिंग इन think of a quick fix more than a sustainable solution for this on a change in the system ये दो चीज़ें if you can shed some light on that In fact, we talked about the first largest expense in the government budget, and the second largest was this one only, which you just right related to. so interest expense and then the SOEs SOEs. okay Now, the fact of the matter is if I were to talk about SOEs, then I have to sort of put them in compartments some yeah so I have to divide it into parts. One part is the circular debt piece, and circular debt piece पे मेरा बिल्कुल clear cut view है. There should not be any subsidies except for only in two situations. One, for poor and vulnerable, right using the BISP scorecard. the lifeline. And two, exports. Okay. Give the incentives for export flows, whether it's services or Right. goods or whatever, but the incentive, the fiscal incentive should be उस इंसेंटिव का मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत बड़ा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड गेट इन फॉरेन करेंसी So therefore, rather than supporting, subsidiaries Across the board. across the board, you need to be much more smarter about it. And in fact, this export-based subsidy
must be performance driven and must be time bound so that you can evaluate it properly Right, whether it makes right. sense or not. Now, it leaves behind the corporations as such. If you look at the top 10 loss making entities, there is no uh, um, uh, one size fit all solution for every entity. That's right. You NHA have का to be कुछ और much होगा, PA का कुछ और होगा, you have to be much more creative पोस्टल and सर्विसेज का कुछ और. That's right. and much more open Right. and professional about it. For example, in case of, for example, distribution companies which are 8 out of जी the बहुत top सारी है. or 7 out of the top ISCO, 10. लेस्को, मैपको, Yeah. जेपको, yeah. So these entities perhaps need to be broken down in further smaller parts, अच्छा, अच्छा. and then the privatization will become much easier. So you Okay. privatize them, but my take on privatization is that there has to be some prerequisites of privatization that you need to follow. First of all, you have to make your regulators independent and and empower them to make the decisions. This is the first time I'm talking about this. It's because you talked about जी. it, so I'm revealing this to you. I also believe that perhaps we should think about listing our regulators on the stock exchange as well. Oh, really? That's And interesting. then it will not only be a revenue generating exercise, but more so it will make them more independent. If you have independent shareholders sitting there on the regulators board as well. And then the appointment of the CEO will be done by the board, not by anyone else, which is now happened because of the SOE law. Right, right. So therefore, some thinking is required to make these regulators independent to begin with. Otherwise, it will be difficult to regulate the private sector, and the purpose, the very purpose that these entities came into being in the first place, शायद वो distract हो जाएगा और divert हो जाएगा. Okay. बाकी जगह पर फॉर एग्जांपल एनएचए है जिसमें थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट है कि एनएचए में लॉस है या एनएचए में लॉस नहीं है क्योंकि वो अकाउंटिंग लॉस है वो कैश लॉस नहीं है वो कैश लॉस है अकाउंटिंग लॉस नहीं है व्हाटएवर इट इज दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर द पॉइंट इज फॉर द एंटिटीज लाइक पाकिस्तान रेलवे पीआईए एनएचए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज social implications of these entities. They are playing a role of integrating. Our society is already, as you said right at the beginning, is polarized, is broken, and if we, follow pure capitalist objective in these organizations, then they probably shut down those routes which are loss making for them, and that could potentially, isolate them. our society even more. These are very dangerous developments. So therefore, we need to be very clear in our minds that we need to be creative about it. For example, in case of, let's say, PIA's Skardu flight Route, or PIA's or Pakistan Railways route to Dalbandin or wherever, yeah. Absolutely. You have to have some kind of viability gap fund provided to them so that the rest of the entities manage professionally. But these routes, government will still provide some kind of subsidy and support. The subsidy will go down. The entities become more profit making and efficient. But your overall objective will still be met. Okay. So very interesting. जो आपने बताया सिल्वर बुलेट सोल्यूशन नहीं है. वन इट्स देयर नो कुकी कटर अप्रोच. हर की अपनी डायनामिक्स और आउटरीच और इफेक्ट ऑन पीपल उसके हिसाब से उसका सोल्यूशन होना चाहिए. एंड एक और जो ऐसा बड़ी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है ना वो ये है कि हमें जो फ्रेमवर्क बनाना है ऑफ एवरी जस्ट टेकिंग द क्यू फ्रॉम यू व्हाट यू वर सेइंग हमें जो फ्रेमवर्क बनाना है प्राइवेटाइजेशन का उन एंटिटीज का वो फ्रेमवर्क जो है ना वो उस हिसाब से होना चाहिए कि जो उसके अंदर क्वालिफाइंग पार्टीज आएंगी वो क्वालिफाइंग पार्टीज फॉर एग्जांपल विल ब्रिंग इन ये यूटिलिटीज हैं प्रीडोमिनेंटली वी नीड टू अंडरस्टैंड पेशेंस कैपिटल लेके आ रही है इफ दे आर नॉट ब्रिंगिंग इन द पेशेंस कैपिटल देन if you give it to a private equity company either that private equity company will go under because of this or these entities will not be able to deliver counterproductive what they were supposed to deliver after privatization. We have the example for that as well, which I don't want to elaborate on. But this has actually happened, and this is what I have been saying.
I'm on record saying this for the last 5 years that we need to select the sponsors right. If we were to look at one bank, for example, who's playing a key role in financial inclusion, because you selected the right sponsors of that, it's delivering. But on the other hand, if you do not select the right sponsors who have the right mindset of understanding the country's mid to long term objectives, you may not be able to fetch the full benefits of that That's correct. privatized सो entity. ये बड़ा मुश्किल काम है करना और अगेन दैट्स अ वेरी पिंचिंग काइंड ऑफ अ थिंग एंड यू एंड आई बोथ गो थ्रू दैट ऑन अ डेली बेसिस. ये डिसीजन लेगा कौन? हु इज़ गोइंग टू बेल द कैट? आज आपने कोई डिसीजन, आपके पास पाकिस्तान स्टील की प्राइवेटाइजेशन आपके सामने कह दिया कि नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होना. जिसने भी कहा वो अकाउंटेबल तो नहीं है ना, उसके जो बाद उससे लॉस नहीं. दिस इज़ वेयर आई वाज कमिंग. एक आर्टिकल में आपने एक जगह पे आपने सेक्युलर डेट के हवाले से और प्राइवेटाइजेशन में आपने कोर्ट्स में लिखा है पॉलिटिकल विल. सो मैं उस तरफ आ रहा था कि इसके लिए एक कंसेंसस सारी पार्टीज़ में होना चाहिए, इंक्लूडिंग सम ऑफ द वंस जो कि इसको ब्लैक बॉल कर देते हैं आखिरी स्टेज पे. डोंट यू एग्री विद दैट पार्ट? So, there is a lot of talk about charter of economy. We have to be realistic about things as well. Everybody has different objectives. Everybody has different ideas. And I think it's just fair That's that true. they should follow their own objectives and ideas in running the country. So therefore, charter of economy type situation, I personally think is a far-fetched dream. It's a pipe dream. However, what is important is that through, for example, vlog like this, we should be able to educate people. Right. And the people pressure is the biggest pressure. It's the charter of economy, it's the charter of democracy, or whatever you want to call it. If people demand for it, then even the political will will come Okay. through. The political will becomes a bit of a becomes a bit shaky जी. when When they follow people the don't pulse, when they follow the pulse, what people want. So I think a lot of discussions like this, educating people what is required, will help in helping creating that. decision makers to take that decision. That's correct. बिल्कुल ये था. अब ये बड़ी मुश्किल बातें हो गई हैं ज़फ़र भाई. अब आपसे ज़रा थोड़ी सी पर्सनल बात कर लें. What I know and from my experience, you have, well, you were born in Karachi, but you went to Lahore. आपकी initial schooling, college Lahore में हुआ. Then you came back, you went to Hilly College, then you went to IBA in Karachi, while your family was in Lahore still. Yes. फिर उसके बाद आपने काम शुरू किया. थोड़ा सा अमेरिकन एक्सप्रेस, देन सिटी बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक, Barclays in Zambia. You were based out of Zambia, Yeah. but you were looking Yes. after Zimbabwe and Botswana also. उसके बाद फिर आप यहाँ पे नेशनल सेविंग्स एंड यू चेंज द प्रोफाइल एंड ऑल दैट. तो दो सवाल मेरे इसमें, knowing you personally a bit, and you are one of the leaders who would like to encourage their people and make more leaders. That is one thing that I of course appreciate about you. आपको इन जगहों पे एक तो पर्सनल आप अगर बताना चाहें द डिफरेंस बिटवीन दैट लाहौर इन टुडेज लाहौर. यू लिव इन लाहौर इवन नाउ विद योर करंट जॉब. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जो पहले होता था, आपने इस्लामाबाद में काम किया व्हेन यूनिवर्सिटी बैंक फॉर मैनी इयर्स. प्रोफेशनल एथिक्स, वर्क प्रेशर्स में क्या फ़र्क है और लोगों का. फिर मैं दूसरा इंटरनेशनल की तरफ आऊँगा. Well, it's a really it's now, I don't think it's. अब इतना फ़र्क नहीं बड़ी रहा. बातें हम करते हैं कि जी कराची में बड़ा प्रोफेशनलिज्म है और लाहौर में नहीं है और इस्लामाबाद. सर मैं ये कहना चाह रहा था. अब वो सच्चाई हकीकत ये है कि it's the professionalism really varies from individual group to That's the. right, that's right. And लाहौर में बहुत बड़े बड़े groups हैं. There is a lot of professionalism there. I don't see any material sort of differences between the two on the business side. The professionalism really varies from individual group to That's the. right, that's right. And लाहौर में बहुत बड़े बड़े groups हैं. There is a lot of professionalism there. I don't see any material sort of differences between the two on the business side. एक चीज़ ज़रूर है कि लाहौर जो है वो ओवर ये पीरियड टाइम बहुत डेवलप हुआ है. कराची ऑन द अदर हैंड हैज़ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ रिग्रेस्ड.
Lahore has done a phenomenal job in terms No of doubt about that. development. And that is the reason why perhaps, the investors who come to Pakistan, they also prefer to be in Lahore and Islamabad than in Karachi, because Well, actually, local simply the consumption की तो demand, infrastructure demand भी and ज़्यादा है you ना are product की. absolutely right. The market is also, the big market is in Is in Punjab so, itself. Yeah. So because the people, जी. and Lahore is right in the middle heart of the province and the country, so therefore it makes a lot of sense to be there. So yeah. तो in जब that sense- जिस ज़माने में आप पढ़ते थे उसके लाहौर में और आज के लाहौर में क्या फ़र्क है अपार्ट फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट जस्ट फ्रॉम नहीं, दैट उस पर्सपेक्टिव. वक्त हमारी प्रायोरिटी जिंदगी की बड़ी डिफरेंट है. मैं क्या वो मजीद आपको व्लॉग पे बात करूं. अच्छा तो अच्छा. अब अब प्रायोरिटीज बिल्कुल डिफरेंट है. अब बुढ़ापा आ गया, उसको जवानी थी, तो आप अंदाजा लगा लेना. अब इस समय इतने ज्यादा आप डिटेल में इसमें ना जाएं तो बेहतर अब है. ये बुढ़ापा है तो चलिए छोड़ दें. सो इस्लामाबाद यू हैव वो इस्लामाबाद और आज के इस्लामाबाद में ऑब्वियसली देयर इज अ विजिबल जमीन आसमान का. हाँ. सो इस्लामाबाद तो एक्चुअली इन अ वे क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ अस. जी. 70 born, 1970 born. Islamabad came into existence, I think 62, 63 or something like जी that. हाँ. So it actually, मेरी एज इस्लामाबाद की एज इन अ वे, थोड़ा सा same ही age फर्क है. bracket. हाँ. So we actually saw that flourishing and growing, which is very comforting. It's very, it's give you a sense of development. Islamabad is expanding very fast. बट जफर भाई आपको इस्लामाबाद को एक मिनी लाहौर तो नहीं बनाना होता ना जो इसका ईथोस था एक वो था इस्लामाबाद का वेरी नहीं, फ्रैंकली नहीं, आई हैव लिव्ड देयर फॉर दोनों में बड़ा फर्क है. फर्क है ना. बहुत फर्क. आपने वो मेरे ख्याल में वो लूज नहीं कर दिया है जो इस्लामाबाद की एक नहीं, वो तो वक्त के साथ हर चीज लूज होनी है मेरे साथ. वो तो प्रोसेस ऑफ एवैल्यूएशन इज एवोल्यूशन that things have to change. Things have चलें. to change for better or worse. इस पे तो आपने कोई ऐसा आपने बड़ा पॉलिटिकल सा जवाब दिया है आपने ये कराची नहीं. लाहौर इस्लामाबाद के फ़र्क के ऊपर एंड पूरा मुल्क हमारा है. आपने इंटरनेशनली काम किया है वेरी इंटरेस्टिंगली यू वर्कड इन अफ्रीका. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड हाउ आर द पीपल यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जानते थे हाउ आर द पीपल देयर. Phenomenal. Southern Africa is like heaven. It's actually a very nice place. Law and order is under control. People are very friendly. It has its own challenges. The markets are not that developed, but then it has its own charm as well. Even that lack of development has its own charm and attraction. So great time there. I mean, people who worked in Africa, lived in Africa, they then don't want to go anywhere else. They want to be in Africa. ओके. आपने रिसेंटली जफर भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अटेंड किया इन स्विट्जरलैंड. हाउ वाज दैट Wonderful एक्सपीरियंस? experience. The one thing which was very pronounced and you could see it all over is the presence of our neighbors there. Every other stall was from Acha. that country. In our case, I think we as the business community and the government needs to be much more organized about it. ओके. We need to have a better understanding and working relationship to showcase Pakistan on these forums. ओके. I think this is something which was व्हिच इज लैकिंग. हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसमें ये बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन आपको नज़र आ रही थी. एंड इट मेक्स अ बिग डिफरेंस बिकॉज प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दुनिया के इस फोरम के ऊपर जहाँ दुनिया का हर बड़ा ग्रुप और लीडर पहुंचता है वन वे और दी अदर, उसके सामने अगर आप शोकेस कर रहे हैं अपने आप को तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट और फर्क पड़ता है. So you mean कि to tell the Pakistan story, it is important कि cohesive. ओके, सो पाकिस्तान स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. मसला ये है कि एक पाकिस्तान वो है जो रियल पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान वो है जो CNN viewed पाकिस्तान है. उन दोनों में बड़ा फर्क है. सो until unless people interact with us, until unless they come on the ground here, चलें ग्राउंड तो सेकेंडरी है, कम से कम हम उनके पास जाके अगर शोकेस करते हैं अपने आप को तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ making them realize that we are a country which has a different perspective, which has tolerance, which has respect, which are very professional. We've got lots of talent. I think that needs to be presented and exhibited. Okay. While we're talking about your stay in other countries or whatever, यहाँ पे एक बहुत important चीज़ आती है
पिछले साल हमने देखा सब 8 लाख लोग यहाँ से चले गए हैं, वट एवर दिस ब्रेन ड्रेन विच इज़ हैपनिंग, यू आर वन ऑफ द पीपल जो कि बाहर गए और फिर वापस आ गए यहाँ पे किया, हमारा बस चले तो कल चले जाएं, जस्ट सेइंग why is that is coming from this last bit that you said. What's your take on this brain drain, or is it Okay, a brain drain? so it's given na dono, we have to see both sides of the coin. So one side of the coin is that obviously that brain drain creates a lack of people in our country. वैक्यूम यहाँ पे हो जाता है create an impact. But on the other hand अगर आप देखें तो यही जो brain है, if they go abroad and if they bring in export flows to us, if they bring prosperity to us, and more so if they present the face of Pakistan, which is the true face of Pakistan, they're working abroad, then it could be beneficial as well. That's correct. If you look at in the success of our neighbor Our country neighbor. today, a major role is played by the NRIs. Right. NRIs who are professionals who've done well there. If you look at the technology companies, every other technology company, if not all, one either they are the CEO Either the top guy or yeah. the number two is from that. That's country. right. The CXOs आपको कहीं ना कहीं वो In मिलेंगे. our case, that is lacking. Perhaps if you look at the flip side of it, it may be not that bad that people are going abroad for more opportunities. That also reflects the fact that there is acceptance for Pakistani talent outside. That's correct. But then if you look at the flip side, I wish we would be able to retain those people for our own sake. But at this point in time, given the priorities, and just as I said, these are the trade-offs. Maybe that trade-off, अगर हम if you see the half glass full. अब here's this example जो अभी आपने ये चीज़ बोली है, जिसको हम नेगेटिव देखते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ से चले गए और फलाना, आपने उसका एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है जो कि हम सोचते नहीं हैं. टू थिंग्स, एक तो वो जो बाहर जाएंगे वहाँ से फैमिली के लिए रेमिटेंसेस भी वापस भिजवाएंगे, तो इट्स लाइक एक्सपोर्टिंग ह्यूमन एसेट्स विच वुड बी सेंडिंग मनी बैक, एंड पाकिस्तान के लिए एक आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे और वहाँ पे अपनी भी ग्रोथ करेंगे और मुल्क के लिए भी आगे कर पाएंगे ग्रोथ इन ऑल द इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव. हमारी जो है ना, हमारी 2/3 of our population is youth. Yes. Now that youth comes into employment market. 5 million people come into employment market every year. Every year, yeah. Even if you're growing at 7-8%, you won't be able to create enough jobs. You're right. So therefore, if their people are going abroad, although they're high quality people, That's right. obviously somebody will only get high quality people outside. Yeah. It may not be. By the way, to my mind, there will be a mix of both. Right. There will be skilled people. Semi-skilled, unskilled laborers to the top guys, to the professionals. मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि वो पूरा कोई बहुत ही हमारा लॉस हो गया ब्रेन का, बट ये कि वो एक और जाहिर बात है मुंह से बाहर लोग जाएंगे. अगर हम देखें रेवोल्यूशन ऑफ यूके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूके, अगर आप उसका प्रीएम्बल देखेंगे तो आपको नजर आएगा देयर वाज अ मेजर एक्सोडस of their people outside the country. And they supported it. Right. मैं किसी तरह भी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ जो है ना आधा ग्लास फुल देखने की जरूरत है बजाय आधा ग्लास खाली देखने की. उसी को अपनी स्ट्रेंथ पे यूज करें, ना कि हम खुद सेल्फ क्रिटिकल होके अपना नुकसान करें. Fantastic. Sir, last but not the least, हम आपको जिस पैराए में जानते हैं, for me you're a friend, boss, mentor, वो सब, लेकिन आप miracle. So you are a miracle man. जी. You are one of the 2 people who survived a horrific crash. बहुत सारी दफ़ा आप ये बातें कर चुके हैं, हर कोई सुन चुका है दूसरे एस्पेक्ट से and all that, but I have personally seen a lot of changes in your personality after that, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. पहले आप हर आदमी को एक कंपार्टमेंट में डाल देते थे, ये तो फलाना है, ये तो जोकर है, ये होते थे ना कुछ टर्म्स जो कि मैं इसमें नहीं बता सकता, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ. चाहे मैं कुछ भी नहीं, ज़फर भाई अच्छा आदमी है, मिले नहीं ये तो वो है, नहीं ज़फर भाई ठीक, हाँ. So very opinionated you were. I have seen that change a lot. आप लीवे लोगों को नहीं देते थे इतना ज़्यादा, although you were socially very okay with that. वो एक बहुत बड़ा मैंने चेंज देखा है. दूसरा empathy, और आप पहले भी बहुत सारे काम करते थे, आपने अभी एक ट्रस्ट भी इसके लिए जो एक्टिविटी शुरू की and all that. So those are some basic changes that I've seen that you. How do you
Yeah, cope with so that, and how was that experience briefly? yeah, just to, as a nutshell, putting this in nutshell, I've talked about it a lot already, but in this vlog, and since you've known me very intimately, so you understand all of this. Um, जो एक चीज़ बड़ी क्लियर कट है ना वो ये कि ज़िंदगी के अंदर जो ना प्रायोरिटी बिल्कुल ठीक हो गई है. सो frankly speaking, nothing is important in life. Only one thing is important, that you have to make an impact. You have to create relationships. You have to um, you have to understand what you want to be remembered as, and then you work towards this. So I want to be remembered as somebody who made an impact, not at a larger scale, but perhaps in a smaller community, Okay. perhaps in my own family, somebody who can do this. Nothing is more important than, Legacy. people remembering you in good words, and you making an impact on people's lives. That is it. This is what the nutshell is. Now, I have 10 learnings post air crash, and those 10 learnings I have written a book on called, well, it's a working title called Least Breath. It could be, I'm actually toying with the name right now. The other option is my favorite song by the Coors, Borrowed Heaven. Borrowed Heaven. Yeah. So let's see what the publisher eventually suggests. But I'm toying between the two names. So these are 10 learnings, and I elaborated those 10 learnings in that book. And hopefully, the book shall be out soon. You will all. My objective is that book will also give some kind of sense to people of what is important in life and what is not. So going beyond the trivial things of the daily routine and our, small ambitions and all that. So that is what you learned. Life and having a life, getting the life back. And it is about making the impact in other people's life. वो other people जो है ना वो not necessarily पूरा मुल्क हो या पूरा province हो या पूरा शहर हो. It could be a selected few, 10, 15, 20 people that matter for you. And they paid forward and it multiplies. This is what, to my mind, this is what is important in life. उस वक्त जो वो इंसिडेंट हुआ था, जिन लोगों ने आपकी उस वक्त पे हेल्प की, अगर 10 दफ़ा हम 100 दफ़ा ये बात कर चुके हैं, बट मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, वो लोग आपको जानते नहीं थे, उन्होंने आपको वहाँ से उठाया और जो कुछ किया एंड ऑल दैट, वो भी एक चीज़ आपने हम जब आप हॉस्पिटल लेते हुए था, तो दैट ऑल्सो चेंज्ड अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव इन पीपल, गिविंग. आपने एक चीज़ बोली थी जो अब आप हर बार बोलते हैं कि इंट्रेंसिकली जो लोग हैं वो अच्छे पीपल आर गुड पीपल. इंट्रेंसिकली पीपल आर गुड पीपल, उनके अंदर अच्छाई प्रिडोमिनेटली होती है. तो वी शुड नॉट थिंक कि हर किसी के अंदर की उसको बुराई के एस्पेक्ट में देखें. सो दैट इज वन. कुछ हमारे एक्शंस भी ऐसे होते हैं जो उनमें से बुराई को जनरेट कर देते हैं. अगर हमारा एक्शन जो है ना वो अप्रोप्रिएट हो तो शायद आप उनकी अच्छी साइड ही को देखेंगे. तो वो लीवे से आता है, वो आपको चांस देना पड़ता है. आपको लोगों को you have to give enough room for people to improve, to show their good side. अगर बुरी साइड सामने आती भी हो तो एट टाइम्स मुश्किल काम है, कहना बहुत आसान है. कोशिश करनी चाहिए कि यार आप जरा ओवरलुक कर छोड़ दें उसको, जरा थोड़ा सा कहें कि अच्छा यार इसको यूं करके देख लो तो कैसे है. Fantastic. And that is something which you triggers a reaction which is a very positive reaction. So patience is another thing that you learned That's right. from this Yes. and all that. I'm learning still. I can't, claim that it's fully there, but the consciousness and realization is there. And I keep on reminding myself all the time that this is what we need to keep in mind. क्योंकि वो ज़रा दिमाग ख़राब होते हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपको भूलते हुए भी टाइम नहीं लगता. मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो ना भूलूँ और अपने जहन में रखूँ. Keep reminding इंसान yourself. हूँ, गलतियाँ होती हैं और शायद होती रहेंगी. कोशिश ये होगी कि अब जो लर्निंग्स हैं उनको एडवांटेज दिया जाए और कुछ बेहतर इंसान बना जाए. Fantastic. That's about it from my side. If you have something, boss. Thank you very much, Irtiza. Thank you you. are doing again a brilliant job. I had really thoroughly enjoyed this.
you are somebody who is very, important for me. You're a very close friend, a very sincere friend, and it was a pleasure for me to be here on Perspective. And an honor for me. Thank you so much, boss. Thank you, sir. Take care. Shukriya. And that's a wrap.